But let's also tell our viewers what are the central government rules which are currently being put. Most of them, remember, are already advisories. Now, one of the most critical ones, of course, is going to be the travel advisory. So what is it? Let's tell you. 2% of the total passengers on a flight will be undergoing random post-arrival testing, and that's going to be very critical. Once they land in India, at least 2% of them, and this is going to be random sampling and testing which is going to happen. Also, the travelers will be identified by the airlines, preferably from different nations, and it's very important to keep track of which nation is sending across how many passengers to know the origins. Also, it is very important to know that they have earmarked the travelers to submit samples and be allowed to leave the airport so that there is no hold up in the airport per se. If found positive, however, samples will be sent to the INSACOG lab network so that they can then carry out more detailed study to find out which specific variant of COVID it is. Not just that, there are other norms also. It's important for us to remember you must not panic. You must instead be very vigilant, and there is a big difference between the two of them. Let's tell you how masks are so far not mandatory, yet it is advised by the Union Health Ministry. Not just that, let's also tell you how random sampling of about 2% of the airport arrivals are going to happen, something that we have already told you about. Also, it's important to be alert and don't panic. You must take all the steps. You must hope for the best and prepare for the worst, I believe. Also, the COVID cases, remember, have been falling over the last 8 months. That is the ray of hope that India already has. And the positivity rate is right now at 0.14. So these are the positives which are also coming in that you must remember, because it's important not to hit the panic button. Also, there is no active cases which have happened in 4 of the states as well as union territories. So this is something which is definitely a silver lining. However, mask up, and 220 crore vaccine doses have been given so far. However, remember, this is something which needs to be stepped up as well. And today, one of the big boosts which is coming in the COVID fight back is that the nasal vaccine has already been approved as well. Once the pricing is decided, which is expected later on in the day, by evening, it's expected to be available. A nasal vaccine is expected to be available on the COVID app as well. Meanwhile, here's a report that our reporter Shivani has filed from Mumbai in one of the mandirs where already several protocols have been put in place for COVID preparedness. अभी यहाँ पर फिलहाल मास्क कंपलसरी नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी भी लोग मास्क पहनना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन भीड़ में इक्का दुक्का लोग आपको जरूर मिलेंगे जो मास्क पहन रहे हैं। फिलहाल मौजूद हैं हम मुंबा देवी मंदिर के बाहर, और ये मंदिर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा मंदिर है जो इस वक्त BA.7 के वेरिएंट के हिंदुस्तान में एंट्री करने के बाद रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है लोगों पर। जितने भी इनके सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जितने भी सिक्योरिटी के दरमियान मौजूद लोग हैं, उन सभी ने मास्क पहना हुआ है। उन सभी को मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, उन भक्तजनों से गुजारिश की गई है कि वो भी मास्क पहने, मास्क को कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके। हालांकि यहाँ पर दूसरी चीज जो ये है कि भक्तजन जो आपको नजर आएंगे वो अधिकतर बिना मास्क के ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी इसे कंपलसरी नहीं किया गया है। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो भले मास्क में नहीं है, लेकिन कुछ दुकानदार भी आपको नजर आएंगे जिन्होंने मास्क पहना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, आप खुद यहाँ पर आपकी दुकान है, इन्होंने देखिए मास्क पहना हुआ है, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। सर, आपने खुद भी मास्क पहना है, अधिकतर दुकानदारों ने हालांकि इसे नहीं पहना है। कैसे देखते हैं मंदिर पर अब कितना असर पड़ेगा अगर कोविड की केसेस दोबारा आए तो? ये मास्क का तो कल से डिक्लेयर हुआ है, अभी तो पब्लिक को मालूम नहीं कोरोना है कि नहीं है। हाँ। तो कैसे पब्लिक अनजाने में मास्क पहनेंगे अचानक? लेकिन ये सही होगा अगर मास्क पहन की तैयारी की जाए सेफ्टी के लिए? सही है। तो कुछ इस तरीके से हाल है कि दुकानदारों ने पहनना शुरू किया है, लेकिन यहाँ पर काफी भीड़ आपको नजर आएगी। With that, there is some big breaking news which is coming in. Let's tell you how the states are mulling curbs to try and control COVID before it strikes. Take a look at how Kashmir has ramped up its preparedness.
कोविड-19 का खतरा फिर से बढ़ रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। कई मीटिंग्स हुई, महासचिव अरुण कुमार मेहता ने भी इस हवाले से एक मीटिंग ली है और स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है कि आने वाले दिनों में वो टेस्टिंग बढ़ा दें और खासतौर पर मास्क के पहनने के लिए अवेयरनेस कैंप्स करें। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस साल कश्मीर घाटी के अंदर पर्यटकों की तादाद जो है आने की वो लगातार बढ़ रही है। और फिर एक बार हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे डल लेक का ये नजारा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं। 24 तारीख से गुलमर्ग और पहलगाम में पहले तो क्रिसमस त्योहार के लिए जो है बड़ा जश्न जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट मनाने जा रहा है। ये बिल्कुल 1 जनवरी तक रहेगा, यानी नए साल की सेलिब्रेशंस भी होंगी पहलगाम और गुलमर्ग में और क्रिसमस का त्यौहार भी वहां पे मनाया जाएगा। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या फैसला ले, पता चलेगा। Well, of course, a very critical meeting is going to be chaired by the Union Health Minister with the state health ministers, and it is expected that at 3 p.m. when that meeting begins, the outcome of that is going to be very critical because the centre may give out an advisory about the steps that the state governments must put in place. Now, remember, after this meeting, it's quite possible that there is going to be more curbs which are going to be put in place. However, Times Now has spoken exclusively to the health ministry sources, and our sources are telling us that masks are not going to be made mandatory except in certain places. However, they are going to highly advise that it be worn in all possible places, both indoors as well as outdoors. Another big step is going to be to increase testing and tracking, and that's going to be critical because already you have the aviation ministry which has announced that 2% of the passengers who are going to be entering India must be tested randomly.